Welcome back. Today we will start next part of the wave. In last lecture we will discuss about the speed of the wave and basic of the progressive wave. What is the progressive wave? Which move forward direction, which move energy. So next we will discuss about principle of superposition of the wave. What is the superposition principle? Principle of principle of superposition of wave. What is the superposition principle? पता है? So when two or more than two and more than two wave propagate from a same point, then what is the net displacement of that particle? एक ही पार्टिकल है, उसी जगह से दो या तीन वेव जा रही है, तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल विल बी equal to sum of displacement by each wave. Equal to sum of displacement by each wave. So write down definition. Principle of superposition of wave. Principle of superposition of wave. According to this principle, when two and more than two wave pass from a same point, then net displacement of that point, net displacement of that point particle will be equal to sum of displacement by each particle, will be equal to sum of displacement by each particle, y equal to y1 plus y2 dash 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 yn, y equal to y1 plus y2 dash 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 yn. This is the principle of superposition. So what is the phenomena that based on the principle of superposition? So phenomena is based on principle of superposition. Phenomena based on principle of superposition. So we will discuss phenomena. First phenomena, that is stationary wave, stationary or standing wave, stationary or standing wave formation. Second phenomena, that is beat formation. Third phenomena, interference. Fourth phenomena, diffraction. Fifth phenomena, Lesage figure. ये कुछ phenomena है that is based on the principle of superposition of the wave. First phenomena, that is standing wave or stationary wave formation, that is in our syllabus. Second phenomena, that is beat, that is also in our syllabus. Third phenomena, interference, and fourth phenomena, diffraction, that is in your 12th class syllabus. And Lesage figure, that is in higher classes
So here in this lecture, we will discuss about the stationary wave formation. We'll discuss about the stationary wave formation. And what is the Lissaj's figure? We can discuss about the Lissaj's figure somewhat. Lissaj's figure, the special figure formed by superposition of the two wave which are perpendicular to each other. Which are perpendicular to each other. When two waves are perpendicular to each other and superposed, then a special kind of figure will be formed, and that figure is known as the Lissaj's figure. So this is given by scientist Lissaj. That's why it is known as the Lissaj figure. We will not discuss about this one at all. केवल आपको अगर आ जाए लिसाज फिगर के बारे में तो क्या ध्यान रखना है, पूछता भी नहीं है नॉर्मली, कभी भी क्वेश्चन नहीं आता इसका. लिसाज फिगर होता क्या है कि जब दो वेव एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, सुपरपोज होती है, तो वहां पे जो एक स्पेशल काइंड का फिगर बनता है, दैट इज नोन एज द लिसाज फिगर. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन. स्टेशनरी और स्टैंडिंग. स्टेशनरी और स्टैंडिंग wave formation. So what is the stationary? By the name, name से क्या लग रहा है आपको, क्या नाम है? Stationary का मतलब क्या होता है? Rest. So it is feel that these waves are not move. These waves are not move. These are stationary. It is seems like this, not actually. It is seems like these waves are not moving at all. So when this wave will be formed, कैसे बनेगी ऐसी wave? क्यों बनेगी? Overlap से नहीं बनती है. So when two wave of same amplitude and same frequency, two wave of same amplitude and same frequency, two progressive wave of same frequency and same amplitude moving in opposite direction, moving in opposite direction and superpose, then stationary wave will be formed. So here like this, here we have two boundary condition like this. This is the boundary condition. One wave moving in this direction like this way. Okay. Another wave that is moving in opposite direction like in this way. So this wave that is formed, this is the stationary wave. This is the stationary wave. This is the wave y1. This is the wave y2. By superposition of these two waves, one resultant wave will be formed that is known as the stationary wave. That is known as the stationary wave. This point where the amplitude of these two waves that is 0, this is known as the node. This is known as the node. This point is known as the node. This point known as the node. And the point where the amplitude of the wave is maximum, this is known as the antinode. Antinode. This is known as the antinode. So what is the distance between node and antinode? This distance between node and antinode, this one, this is equal to lambda by 4. This is equal to lambda by 4. Distance between two conjugative node or two conjugative antinode like this. This distance. This is these two conjugative antinodes. So distance between two conjugative antinode, that is lambda by 2. Or same way distance between these two conjugative node, that is also lambda by 2. One complete cycle, that is will form here to here, that is equal to lambda. One complete cycle we know in wave, distance between two conjugative crest or trough, that is known as the wavelength lambda. Wavelength lambda. Okay. So what is the definition of this one? When two progressive wave. Which wave? Progressive. Two progressive wave of same frequency, and same amplitude, moving in opposite direction. Moving in opposite direction
propagate, moving in opposite direction, superpose each other, then stationary wave will formed will formed. समझ में आ गई बात? So in this wave, conjugative node and antinode will be formed. Conjugative node and antinode will be formed. So in stationary wave conjugative node and antinode will be formed. कंजुगेटिव नोड और एंटी नोड बनेंगे. ठीक है. अब नोड नोड के बीच की डिस्टेंस λ/2, एंटी नोड बीच की डिस्टेंस λ/2, नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4. समझ में आ गई बात? अब इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव. व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव दैट वी विल डिस्कस नाउ. इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव. एक दूसरे से मिलना, सिंपल याद रख ले. ठीक है. एक ही पॉइंट पाके एक साथ मिलना, दैट इज सुपरपोज. इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सो फॉर स्टेशनरी वेव, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वेव? वेव मस्ट हैव द सेम एम्पलीट्यूड. And second thing, wave must have same frequency and direction of the wave must be opposite to each other. That means let one wave y1 that is equal to a sine omega t minus kx. This wave moving in positive x direction. Moving in positive x direction. You know? Positive x direction. Second wave y2 that is equal to a sine omega t plus kx, that is moving in negative x direction. That we discussed in last class or not? Which way we move in negative x direction and which way we move in positive x direction. When sine of the omega t and kx is same, that way will move in negative x direction. When sine of the omega t and kx is opposite, then that way will move in the positive x direction. हमने चार केस लिए ना अलग अलग. जैसे माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स आल्सो मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ओमेगा टी माइनस के एक्स मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, omega t plus kx moving in negative x direction, minus omega t minus kx also moving in negative x direction. That we have discussed or not in last class? याद है कुछ? याद तो कराना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी याद करते हो. Now what is the principle of superposition? Principle of superposition, net displacement y of the resultant wave, that is the stationary wave, that is equal to y1 plus y2. y1 plus y2. Here we will apply formula y equal to a sine omega t minus kx plus a sine omega t plus kx. Now I think you everyone know the formula of sine a plus minus b. No? क्या होता formula? Sine a cos b plus cos a sine b plus minus. Can we apply this formula here? So y equal to what? A sine omega t cos kx minus a cos omega t sine kx plus a sine omega t cos kx minus plus a cos omega t sine kx. So here you know this term of positive and this term of negative. These two terms will be cancelled out. And these two terms are added. These two are same. So
So what is the y? Y equal to 2a sine omega t cos kx. This is the equation of stationary wave. Equation of stationary wave. Equation of stationary wave. This is the equation of stationary wave. Now we will find the condition where the node will form, where the antinode will form, किस पोजीशन पे बनेगा, किस टाइम पे नोड बनेगा, that we will identify. So next, condition for node and antinode. Condition for node and antinode formation. कैसे नोड बनेगा, कैसे एंटीनोड बनेगा, वो निकालना है. तो एक्चुअली मुझे बताओ बेटा, हमने इक्वेशन क्या लिखी? y इक्वल टू 2a sin omega t cos kx. So first of all we will discuss about antinode. So in this one we will discuss for time. For time के according देखें. So which function here? This is the time function. That is the sin omega t. This is the function of time or not? Other function is constant. For the time cos kx is constant. So for antinode formation, this value will be maximum or minimum. That will be antinode plus a or minus a. So sin omega t must be plus 1 or minus 1. Sin omega t must be plus 1 or minus 1. So sin omega t equal to plus minus 1. When the value of sin will be plus minus 1, what is the angle? साइन के अंदर क्या एंगल होना चाहिए कि वैल्यू प्लस माइनस 1 आए? मल्टीपल ऑफ 90, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2. उस पर क्या होता है? साइन प्लस माइनस 1 देता है. दैट मीन्स ओमेगा टी, ये जो साइन के अंदर एंगल है, दैट मस्ट बी इक्वल टू पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, डैश 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 2n माइनस 1 पाई बाई 2. ऐसा होगा कि नहीं होगा? अब ओमेगा क्या ले सकता हूं मैं? ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी. 2 पाई अपॉन टी इंटू टी इक्वल टू पाई बाई 2, कॉमा 3 पाई बाई 2, कॉमा 5 पाई बाई 2, डैश 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 2n माइनस 1 पाई बाई 2. ये चीज है. अब पाई कॉमन ले सकते हैं इधर से. पाई से पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास? टी. और इसको ऐसा लिखते हैं कि इधर टी को इधर लाएं, ये टी इधर जाएगा तो क्या? टी अपॉन 2, और ये 2 ये 2 इधर डिवाइड में आएगा तो 1 अपॉन 2 लिख दो इसके साथ. देखो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया. ये टी जो इधर डिवाइड में किसमें आएगा? सब में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में. और ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में इसमें आएगा सब में डिवाइड में, कॉमा 3t अपॉन 2 इंटू 1 बाई 2, कॉमा 5t अपॉन 2 इंटू 1 बाई 2. सिमिलरली 2n माइनस 1 t अपॉन 2 इंटू. कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं. तो t की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसका मतलब एंटीनोड कहाँ बनेगा? t बाई 4 पे एंटीनोड बनेगा. 3t बाई 4 पे एंटीनोड बनेगा. 5t बाई 4 पे एंटीनोड बनेगा. इसी तरह से डैश 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 2n माइनस 1 t बाई 4 पे एंटीनोड बनेगा. जहां जहां पे t बाई 4 होगा वहां पे क्या बनेगा? एंटीनोड बनेगा. और आप देख सकते हो इसके अंदर यहां अगर 0 है, ये t बाई 2 होता है, ये क्या होता है? t. पूरा t हो गया. इसके बीच की वैल्यू क्या होगी? t बाई 2 होगी कि नहीं होगी बताओ? सॉरी, t बाई 4. बीच की वैल्यू क्या होगी? t बाई 4. t बाई 4 पे क्या दिख रहा बनता आपको? एंटीनोड दिख रहा नहीं दिख रहा है? इस तरह से इसके आगे वाला जो होगा, ये वाला, ये 3t बाई 4 होगा. क्या होगा? 3t बाई 4 भी क्या बन रहा है वापस से?
एंटी नोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस तरह अगला देखोगे 5t/4 आएगा, यहाँ भी क्या बनेगा? एंटी नोड। जहां पे t/4 वैल्यू आ रही है वहां पे क्या बन रहा है आपका? एंटी। दिस इज अकॉर्डिंग टू टाइम, दिस इज अकॉर्डिंग टू टाइम। नाउ व्हाट इज द अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ? वेवलेंथ का अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे? ये तो हमने किसके लिए निकाल दिया? टाइम के लिए। वेवलेंथ का अकॉर्डिंग निकालना तो कैसे निकालो? व्हाट इज द वैल्यू अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ? नाउ अकॉर्डिंग टू wavelength, according to वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कैसे निकालोगे बेटा बताओ? हमारे पास cos के x है, वेवलेंथ के लिए कौन सा फैक्टर है हमारे पास? cos के x मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस, तभी तो एंटीनोड बनेगा। अगर साइन ओमेगा टी को कांस्टेंट मान लें, अगर पोजीशन को लें, तो cos के x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? +-1। अब cos की वैल्यू +-1 कहाँ होती है? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, जो भी पाई का मल्टीपल है वहां पे क्या होता है? cos +1 या -1। तो के एक्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, डैश 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 एन पाई। पाई का मल्टीपल जहां है वहां होगा। यू नो व्हाट इज द के? के क्या होता है? के क्या होता है याद है? 2 पाई अपॉन प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई अपॉन 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, डैश 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 एन पाई। कैन वी टेक पाई कॉमन एंड कट इट? तो कॉमन लेके कट करने क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू, ये लैम्बडा इधर जाएगा तो पहला तो 0 ही होगा। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो कोई फर्क है नहीं पड़ना। ये लैम्बडा इससे मल्टीप्लाई होगा तो लैम्बडा, और ये 2 क्या आएगा इसमें? डिवाइड में आएगा। फिर क्या आएगा? ये 2 लैम्बडा अपॉन 2, फिर 3 लैम्बडा अपॉन 2, इसी तरह से क्या आएगा? एन लैम्बडा अपॉन। पाई से पाई तो कैंसिल हो गया ना दोनों तरफ, ये पाई है इधर भी पाई है, पाई से पाई कॉमन आ क्या हो जाएगा? कैंसिल। लैम्बडा तो डिवाइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो जहां एक्स जो है आपका पाथ डिफरेंस 0, लैम्बडा/2, 2 लैम्बडा/2, 3 लैम्बडा/2, लैम्बडा/2 का जो भी मल्टीपल आ रहा है उस समय क्या होगा आपका? क्या बनेगा? एंटी नोड। क्या बनेगा? ये कंडीशन किसके लिए हो गई? एंटी नोड के लिए। नेक्स्ट कंडीशन वी विल डिस्कस फॉर द नोड फॉर्मेशन। कंडीशन फॉर नोड फॉर्मेशन। कब नोड बनेगा? तो वापस वही इक्वेशन लिखेंगे, पहले टाइम के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टाइम। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी बेटा बताओ? y इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स। अब बताओ मुझे, इसके अंदर अगर आपको इसको क्या करना है? 0 करना है, एंड नोड के लिए क्या करना है? 0। तो या तो ये 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट पहले देखें, साइन ओमेगा टी इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा? 0। 0 कब आएगा बताओ? 0 डिग्री पे आता है, पाई पे आता है, 2 पाई पे आता है, 3 पाई पे आता है, एन पाई पे। ओमेगा को क्या ले सकते हैं? 2 पाई अपॉन टी, इंटू टी इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, डैश 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 एन पाई। अब बताओ मुझे, पाई कॉमन लेके कट कर दें, टी मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो टी इक्वल टू क्या आएगा? पहला तो 0 ही आएगा, फिर क्या आएगा? t/2, देन 2t/2, देन 3t/2। जो एंटी नोड फॉर्मेशन किसके लिए आ रही थी? पोजीशन के लिए। वो सेम यहाँ पे आ गई, वो लैम्बडा था, यहाँ पे टी है, ये क्या आ जाएगा? n t/, दैट इज द कंडीशन फॉर टाइम फॉर द नोड फॉर्मेशन, फॉर द नोड फॉर्मेशन। नाउ पोजीशन के लिए निकाल लें, फॉर पोजीशन, फॉर पोजीशन, फॉर पोजीशन। पोजीशन के लिए निकालने क्या आएगा हमारे पास? cos के एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा? 0 आना चाहिए। तो 0 कब आएगा? के एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास? पाई/2, 3 पाई/2, जो भी पाई/2 का इवन मल्टीपल ऑड मल्टीपल होता है वहां पर सब cos क्या होता है? 0। 5 पाई/2, 2n-,
1 पाई बाई 2। तो k को क्या लिखेंगे 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता है x इक्वल टू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 डैश 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 2n माइनस 1 पाई बाई 2। 2 पाई से पाई सब कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या आएगा लैम्बडा बाई 2 और 2 भी मल्टीप्लाई में वो आएगा डिवाइड में इंटू 2 3 लैम्बडा बाई 2 इंटू 1 बाई 2 5 लैम्बडा बाई 2 इंटू 1 बाई 2 सेम अपने पास 2n माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 इंटू 1 बाई 2। फाइनल कंडीशन क्या बनेगी बताओ x इक्वल टू लैम्बडा बाई 4 कॉमा 3 लैम्बडा बाई 4 कॉमा 5 लैम्बडा बाई 4 डैश 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 2n माइनस 1 lambda by this is the equation condition for node formation according to position. So this is all about your stationary wave, all about your stationary wave. What is the stationary wave? What is the distance between node and antinode? What is the node? What is the antinode? What is the condition for formation of the node and antinode? So this is all about this lecture. Next part of this we will discuss in next class. Thank you.